So, hello, very good evening to all. I hope my voice is audible to all of you. एक बार confirm कर दो फटाफट. I'm audible. Yes. Good. Good. So, welcome everyone. Right. So, this is the first class for your, this is the first session for your 12th class. Hmm. So in this class, basically, we are going to, discuss the basic, what thing that we are going to do, क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्राइटेरिया होता है जेई मेंस के लिए, हम किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट्स ऑफ थिंग इंट्रोडक्शन पार्ट इन दिस क्लास. डन. So this is going to be a very interesting session for all of you. In this class we know each other, है ना? हम एक दूसरे को जानेंगे, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस तरीके से हम लोग पूरा रन करेंगे अपना प्लान्स को, क्या करना होता है, कैसे प्रिपरेशन करना होता है, राइट? सो अभी एज वी all just come in 12th class, right? After successfully completed 11th class, we are in 12th class, right? So now tell me, can anyone tell me, want to share your experience कि कैसा लग रहा है 12th में आके? बिकम स्टडी बिकम मोर इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है, क्या लग रहा है? मतलब कैसा फील हो रहा है 12th में आके, लाइक स्टडी वाइज, कि अगर आपको थोड़ा सा 11th से ज्यादा मुश्किल लग रहा है या 11th से थोड़ा इजी लग रहा है? एनीवन वांट टू शेयर एनीथिंग ऑन दिस? यस. चलो, मैं बताता हूँ. So first of all, we are going to see the, JEE Meet. We are going to talk about the JEE Mains and NEET. दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे. More tension, sir. Okay. No, it's not like a tension. Just enjoy the study, right? Happy learning होना चाहिए. तो it's not like a tension. बहुत normal है. मतलब जब आप 12th में आओगे ना, तो जैसे तुम 10th से 11th में गए थे, when you move just from class 10 to 11th, so it's quite difficult, right? Because in your 10th class only four chapters are there for chemistry, but in 11 total 10 chapters are there, right? Nine chapters are there. So it's a bit difficult, lots of things will come in the mind. But after successfully एक साल आपने जैसे ही निकाला, अब क्या लग रहा है? अब लग रहा होगा 12th में आके थोड़ा सा चीजें आपको इजी लगेंगी, राइट? चीजें काफी समझ में आएंगी, तुम्हें लगेगा हाँ यार ये तो नॉर्मल है, थोड़ा बहुत है ना? तो 12th इज quite easy as compared to 11th, because एक तो आप ढल चुके हो पूरा एक साल, you know better that what type of chapters were coming, you aware about the basic concept, you know how to write the electronic configuration, you know how to remember the mole formula, concentration formula. So this thing you already know, right? So as you know all these thing, right, so it's a very, easy for you to understand the next concepts, right? So basically in chemistry, we divide the chemistry in three portions, right? In class 11th also we talk about the same. Key in chemistry, we divide the whole portion in a three categories. That is the physical chemistry, inorganic chemistry, and the inorganic chemistry, right? So total we have a three major portion on which we classify. Yes, Sahana, you want to ask anything? No? Okay. Right. So basically, we're going to see the syllabus and all this thing. Hmm. So let's start. So, if we talk about the JEE exam 2025-26, you are going to give your first exam in 2026, right? Sir, if I am dull student in class 11, then can I score good marks in 12th? Obviously, you can score. There is no point of become dull student and all this thing. It's just a matter of how smartly you overcome this difficulty, right? And कितना अच्छा work hard आप कर सकते हो. So it's not like if you are not good in study in class 11, that's all means that you are also not good in study in class 12. This is not the fact. The fact is, if you work hard, if you work in the right direction,
राइट। अगर आप अच्छे से चीजों को समझोगे करोगे, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन 12th. Not only in 12th, you also going to score good marks in JEE main examination as well, right? So let's talk about some JEE main examination जो अभी हुआ है 2025 में। आप लोग अपना जेई मेंस का फर्स्ट शिफ्ट दोगे कब? 2026 में, राइट? सो बेसिकली वी ऑल नो दैट ना कि इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, सभी स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है टू बिकम एन इंजीनियर, राइट? एंड नाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल इंजीनियर, यू वांट्स टू गेट एडमिशन इन द वेरी गुड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट. Right. Now, there is only one way to get the admission in a good engineering institute, and the way is JEE means exam, JEE advanced exam, right? So, if you prepare good for the JEE examination, then definitely you'll get the admission in good IITs or good NITs or good government college, right? Apart from this, if you are unable to score good marks in JEE means, then you also search for the other option. But the best way to get the admission in very very reputed college, reputed NITs and IITs, to crack the JEE main examination. So that's the reason why we all are here. We all are here to prepare for the JEE mains and NEET examination, right? Because some of you preparing for NEET, some of you preparing for JEE mains. Chemistry is common for all of you, right? So in basically to get the admission in good colleges, you must aware about the JEE and NEET examination, right? तो आपको JEE का एग्जाम्स अच्छे से क्लियर करना है, एंड देन यू आर गोइंग टू ऑल्सो फॉर द नीट स्टूडेंट, आपको नीट का एग्जाम अच्छे से क्रैक करना है, राइट? नाउ व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर JEE? इज देयर एनी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? नो, इट्स द नॉर्मल क्राइटेरिया जो सभी फुलफिल करते हैं. तो देयर इज अ सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर इन द एग्जाम. कैंडिडेट शुड गेट अ मिनिमम 50%, है ना, पास होना चाहिए, 50% मार्क्स आने चाहिए इन 10+2 एग्जाम. और जो भी 10+2 एग्जाम पास्ड है या अपियरिंग है 2025-26 में, वो भी इस एग्जाम को दे सकता है. सो देयर इज नो हार्ड क्राइटेरिया फॉर द जेई मेन एग्जामिनेशन. नाउ व्हाट वाज द पैटर्न? क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, जरा देखो फटाफट. सो इफ यू टॉक अबाउट द जेई मेन एग्जाम पैटर्न, so basically in JEE means two sections are there. The first section is basically MCQs, and the second section is basically numerical values question. And total marks beta is equal to 100. So total we have 100 marks of paper, out of which 25 questions were there. कितने questions होंगे? 25 questions were there, right? सो नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री देखो, इसमें अब थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है. ये क्या है, पहले अगर आप कोविड से पहले देखो, तो टोटल 10 क्वेश्चंस वर देयर. कोविड कोविड के बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ था कि 10 में से कोई 5 क्वेश्चंस करने होते थे. नाउ वी हैव ओनली 5 क्वेश्चंस, ठीक है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है. सो वी हैव ओनली 5 क्वेश्चंस, राइट? सो वी हैव, अब हमारे पास, सर आई वांट टू गेट अ सीट इन RI. Yes, definitely you'll get the seat if you prepare good for the competitive examination such as means and all state government examination, right? Okay, now let's see. Total we have 25 questions, right? So 2024 तक क्या आ रहा था, टू बिफोर दिस 2025 2024 तक क्या था कि इन न्यूमेरिकल बेस यू हैव अ 10 क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ दिस 10 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस. But now this is removed, this pattern is removed. Now only 5 questions were there, and you need to do all these 5 questions. So 20 MCQ questions, right? 20 MCQ questions, and no 10, only 5. So 5 questions, that is a numerical based question. So you need to attempt this 5 question. So total number of question is 25. 25 into 4, that is 100. So 100 for physics, 100 for chemistry, and 100 for mathematics. So same pattern will follow in each and every subject. Now, if we talk about the marking scheme, so if you do the correct answer, तो आपको करेक्ट करने के लिए +4 मार्क्स मिलेगा. एंड और फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -1 आपका डिडक्टेड हो जाएगा. और अगर आप किसी को छोड़ देते हो, ब्लैंक अनआंसर्ड करते हो, सो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर कि करेक्ट करेगा तो कितना मिलेगा? +4. और अगर आपका गलत हुआ कोई भी, तो कितना कटेगा? -1. 1/4 मार्किंग होती है, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए कोई भी मार्क्स नहीं है. सो टोटल आपको समझ आ गया ना कितने क्वेश्चंस हुए?
सो टोटल नॉट 90 क्वेश्चंस, अब कितने हो जाएंगे? ओनली 75 क्वेश्चंस। लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग 2026 के लिए भी क्या हो जाएंगे? 75 क्वेश्चंस। 25 25 25 यानी 25 ईच। तो दोनों में से आपको 25 25 करने होंगे, और टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 75 क्वेश्चंस। सो 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। किसी को कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क एनी डाउट टिल। एनी डाउट? सर व्हाट अबाउट नीट? ओके सर, इट इज अ कंप्यूटर मोड, यस बेटा, इट्स अ कंप्यूटर मोड टेस्ट, ठीक है। सो जेई मेन एग्जामिनेशन, बोथ जेई मेंस एंड जेई एडवांस, बोथ आर कंप्यूटर मोड, ठीक है। सर इन मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, नो बेटा, नो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन इन मैथ्स। टोटली द क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th, राइट। तो जो भी आपने 11th 12th में पढ़ा है उसी से क्वेश्चंस आएंगे। सो देर इज नो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन। डन। एनी डाउट? नेक्स्ट बताओ। Sir, are these classes are also help to fulfill of set? Yes, beta. Basically, CET test के लिए भी these classes are very helpful, because if you are preparing for the JEE examination now, then definitely all the state examination, either this is a Karnataka state examination, Gujarat GU set या Maharashtra state examination, in all examination आपको help मिलेगा, right? You get a help if you are preparing for the JEE main. So it's a very important thing, right? Sir, when classes will start? Beta, classes will already start. Today is the orientation day, na? So from the day after tomorrow, right? From tomorrow we are going to start the class, right? Sir, minimum marks in JEE means to get selected. Okay, so there is not a minimum criteria as such. So there is a minimum criteria like to qualify the paper, right? For example, let us assume if we have a 300 paper, 300 number का question paper था. So every time the cutoff varies. So let us assume for general category, I'm saying if you score 100 or 110, then you are very much safe, right? You are very much safe. You can clarify the paper, right? you now you are eligible for write जेई एडवांस पेपर। तो अगर आप इतना नंबर भी ले आते हो 110, तो आप एलिजिबल हो जेई एडवांस देने के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज द गुड मार्क्स टू गेट स्कोर टू गेट सेलेक्टेड इन एनआईटीज एंड गवर्नमेंट कॉलेज डायरेक्टली थ्रू जेई मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जेई मेंस एग्जामिनेशन से भी सर, which guide will you advise us to use, which is one of the best? Yes, beta, most of the state test also computer based test, right? So most of the test directly क्या हो रहा है आजकल, कंप्यूटर मोड ही हो रहा है, right? Now, which guide will you advise us to use? Which guide in the sense, I want to understand your question, beta. Guidance means क्या पूछ रहे हो? If the student scored 92 percentile in NIT but he scored bad in advance, did he get NIT? बेटा, एनआईटी में जो एडमिशन हो रहा है ना, इट टोटली बेस्ड अपॉन ओनली जेई मेन एग्जामिनेशन, सही। जेई मेन टू रिजल्ट। सो जेई मेंस के रिजल्ट पे, चाहे मेंस वन और मेंस टू दोनों को मिला के एक आपका कट ऑफ बनेगा। सो अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू स्कोर 200 250 आउट ऑफ 300, देन यू गेट डायरेक्टली एडमिशन इनटू एनआईटीज, देयर इज नो नीड टू राइट द एडवांस पेपर, राइट। Sir, classes for both NEET and JEE students same. Yes, classes for both are same, because chemistry are almost same. For if you prepare for mains and NEET na, the level is quite same, right? Only the level of questions they are asking, practicing question is quite difficult. मतलब different है थोड़ा सा, which we are going to understand through the test. AIT test we are going to conduct. We are going to conduct the mock test, monthly test. So we are going to conduct each and every chapter test for each and every chapter.
सो थ्रू द क्वेश्चन प्रैक्टिस यू गेट टू नो कि जेई मीन्स नीट थोड़ा क्या है, दोनों में केमिस्ट्री का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, हम लोग को ऊपर लेवल का ही पढ़ना है। जेई एडवांस बेटा बेसिकली दो पेपर होते हैं जेई एडवांस में। सो इन जेई एडवांस टू पेपर्स अप्रोक्सीमेटली 182 183 मार्क्स का एक पेपर आता है। तो 183 का एक, 183 का एक, दिस इज फॉर 2024 के लिए बता रहा हूँ। 183 मार्क्स का पेपर आया था, राइट। उसमें आपके एमसीक्यूज भी होते हैं, मोर देन वन करेक्ट एमसीक्यूज भी होते हैं, मैट्रिक्स मैच भी होता है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस वहां पे होते हैं। Sir, now the result of JEE main is coming in percentile form, not in total marks. So how to calculate or analyze the result as a percentile as calculated as per the exam session and the student approach for the examination? Yes, beta. Now, if we talk about the percentile, now, देखो, if you consider the last year data, if you score just 8 to 9 questions in chemistry. So total questions in chemistry, how many questions in chemistry are? So basically 25 questions. So if you score only 8 to 9 question in chemistry, you'll get 90 percentile. You get 90 percentile. But you can't get seat on the 90 percentile. 90 percentile is very less to get the admission in NITs and reputed colleges. So try to, solve question at least out of 25. Try to focus to solve at least 20 question so that you are in a very safe, portion and you get the admission in your desired college. Done? सर मिनिमम मार्क्स टू सेलेक्ट जेई एडवांस बताया ना, आउट ऑफ 300 इफ यू स्कोर 100 मार्क्स, 105 मार्क्स, एवरी ईयर इट वेरी। सम टाइम 80 मार्क्स पे भी क्वालिफाई कर जाते हैं, सम टाइम 10, 110, 110 पे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इट्स वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। व्हाट इज परसेंटाइल? बेटा परसेंटाइल, परसेंटाइल इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम परसेंटेज। परसेंटाइल में क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि जैसे मान लो आपका पेपर आसान आया। हम्म आप जिस शिफ्ट में पेपर देने गए, बिकॉज जेई मेंस के बहुत सारे शिफ्ट होते हैं पेपर देने के। तो आप जिस शिफ्ट में गए, मान लो वहां पे पेपर जो था वो आसान आया, सबने ही क्या कर दिया, सबने ही अच्छा पेपर कर दिया। तो उस केस में आपकी परसेंटाइल क्या है, उस केस में परसेंटाइल जो है वो थोड़ी कम बनेगी। समझ रहे हो? क्योंकि परसेंटाइल डिपेंड्स करता है सभी जितने भी बच्चे हैं उस पूरे का एग्जाम कैसे गया है उसके बिहाफ पे, कि सबका अगर आसान पेपर गया है तो परसेंटाइल कम बन गई, सबका टफ गया है तो परसेंटाइल आपकी अच्छी बन सकती है। तो लाइक दिस ओनली। ठीक है। नाउ समथिंग अबाउट नीट। ओके बेटा, नीट भी करेंगे अभी, पहले इसको एक बार खत्म कर लें। सर विल यू प्लीज सजेस्ट सम पब्लिशर्स फॉर प्रिपरेशन? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कवर ऑल द एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। राइट, फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन बुक से आते हैं क्या? बेटा इसमें तो आपको फिजिक्स वाले टीचर और मैथ्स वाले टीचर अच्छे से गाइड करेंगे, है ना। बट सारे क्वेश्चन बुक से ही आते हैं, अलग नहीं आएगा। बेसिकली एनसीईआरटी तो बहुत जरूरी है, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हाँ, रेफरेंसेस बुक आप यूज कर सकते हो मैथ्स में अगर आपको बताएंगे, पर फिजिक्स में, बट इफ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री ना, केमिस्ट्री में पूरा एनसीईआरटी का पैटर्न होता है, राइट। तो ट्राई टू कवर ऑल एनसीईआरटी, है ना, पूरा एनसीईआरटी अच्छे से करने का ट्राई करो पहले तो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करने का देखो कि किस तरीके से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हो। फॉर जेई मेंस एनसीईआरटी, यस बेटा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड पीवाईक्यू, अगर आप ये तीन चीजें कर लेते हो अच्छे से तो डेफिनेटली इट इज वेरी गुड, राइट। तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन जेई मेंस। अगर अगर मैं केमिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ, कि अगर आप केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो, नोट्स को रिवाइज कर लेते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेते हो, देन यू हैव अ वेरी गुड चांस टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन जेई मेन एग्जामिनेशन। डन। For class 11th student classes started, sir? No. For class 11th, we are not started classes still. But in coming days, 10, 15 days, we are going to start class for class 11th as well. Done? Any queries और कोई भी query तो पूछो? Just give me 2 minutes. मैं चार्जर को प्लग कर दूं।
किसी का और कोई भी क्वारी है पूछते रहो भाई, जल्दी फटाफट। यस एनीवन। यस एनी क्वारीज? नो। सर योर नेम। सर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इट हेल्प्स, डेफिनेटली इट हेल्प बेटा। Okay, so my name is Vivek Tiwari, right? I am from Delhi NCR. So I'm going to teach chemistry, right? I'm going to teach you chemistry for both NEET and JEE. Okay, done? Now, let's see the next one. So duration of exam is 3 hours. It is totally online exam. So number of section we have a math, physics and chemistry section. Hmm. Yes, I'm going to teach you a chemistry, right? Hmm. So the total number of questions, that is the 75 questions. ठीक है, total कितने questions है? Can you suggest some good books other than NCRT? Yes, beta, I'll suggest as soon as we started the class now, as the chapters going on, I suggest because different books are available. For example, if you consider the physical chemistry, we are using Anavasti, right? Similar for the organic chemistry, we are using GRB publication books. So there are different kinds of book for the different portions of chemistry, right? So I'm going to suggest each and every one. ठीक है, सबको बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स हम लोगों को यूज करनी है। बट इन इनिशियल डेज ना यू ट्राई टू कवर ऑल द एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट कंप्लीट योर ऑल एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। चलो, नाउ सो लेट्स सी द कौन कौन से चैप्टर्स है हमारे पास जिसको हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर जो आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, ध्यान होगा आप सभी को, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट? सो यू ऑलरेडी स्टडी अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। सबको पता है ना? मैटर एंड इट्स नेचर, Dalton atomic theory, the concept of atom, molecule, elements, and compounds. What are the physical quantities and their measurement in chemistry? What is precision? What is accuracy? Significant figures, SI unit, laws of chemical combination, atomic and molecular masses, mole concept, hmm, molar masses, percentage composition, empirical and molecular formula, chemical equation, and stoichiometry. So these things we are going to study in the first chapter. I hope you already studied this chapter now in your 11th class. So are you all aware with this chapter? याद है किसी को या भूल गए? मोल कॉन्सेप्ट। यस, टेल मी। यस सर, वी रिमेम्बर सर। आर यू गोइंग टू स्टार्ट? नो 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 नो, आई एम जस्ट सेइंग कि क्या सिलेबस होता है जेई मेंस में पूरा अपना केमिस्ट्री का। तो उसमें तो 11 12 दोनों आएगा ना, तो इसलिए मैं दोनों को बता रहा हूँ आपको, ठीक है, पूरा सिलेबस। देखो, नाउ नेक्स्ट चैप्टर, ये फिजिकल केमिस्ट्री मींस ज्यादातर इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, राइट? वी नीड टू राइट द फॉर्मूला, वी नीड टू राइट द क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर है, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो जेई मेंस के सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं है, बट जेई एडवांस में है, ठीक है। तो जेई मेंस में ये नहीं है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो जिसके अंदर हम पढ़ते हैं अलग अलग कि गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिकली गैसेस और लिक्विड को इसमें हम ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, कि गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे कैसे हम समझते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर है। नेक्स्ट वी हैव एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 12। आपको ध्यान होगा इसके बारे में।
एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, कि थॉमसन और रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल्स थे एंड देयर लिमिटेशन थे। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन सारी चीजों को, क्वांटम नंबर, अबाउ प्रिंसिपल, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, so these all things are important in this chapter. Done. Atomic structure clear हुआ? In this chapter we learn, we are going to learn how to write the electronic configuration, shell, subshell, इलेक्ट्रॉन की पूरी दुनिया क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। Sir, today, no, beta, today is the orientation day only, so there is no class today. Okay, so starting the class from tomorrow. Done. सो नेक्स्ट चैप्टर वी हैव अ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो तुम लोगों ने पढ़ी होगी ऑलरेडी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, उनके बारे में बात करेंगे। फिर हमारे पास आएगा थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स भी 11th में आपने पढ़ा होगा। थर्मो क्या होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे। एक तो स्पॉन्टेनिटी का ही रिएक्शन था, कि स्पॉन्टेनिटी कब होता है, डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है, ई नॉट। और किस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी को पढ़ा था हमने, कि एंट्रोपी क्या होता है, किस तरीके से इसके वैल्यूज याद रखते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सो दीज ऑल आर अंडर द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज एंथैल्पी, हाउ टू फाइंड एंथैल्पी, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने इसमें पढ़ी है। नेक्स्ट अब देखो, ये 12th का फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा, सॉल्यूशन। इसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर क्लास 12, ठीक है। तो क्लास 12th का हमारा ये सबसे पहला चैप्टर होगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। लाइक मोलालिटी पढ़ेंगे, मोलारिटी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड मास बोथ पढ़ेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। सिमिलरली आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन उसका पढ़ेंगे, प्लॉट फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहीं से अपना हम 12th स्टार्ट भी करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन। फिर आएगा न्यूमेरिकल वाला चैप्टर आपका, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में भी दो पार्ट है, एक है फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक है केमिकल इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, कि मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है, कि इक्विलिब्रियम जो है वो क्या बोलता है, कि भाई ना मूवमेंट नहीं हो रही, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोनों का जो रेट होता है वो बराबर होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो होता है वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है। फिर हम इसमें ली चार्टियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हम इसमें कांस्टेंट पढ़ेंगे, कि क्या हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। No, beta, we are not going to complete all the chapters in 2 months, but we are going to cover 2 3 chapters, right? 2 3 chapters हम इन 2 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। लाइक सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, राइट। सो सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। तो दिस चैप्टर्स वी आर ट्राइंग टू कवर, इन सबको कवर करेंगे। ठीक है, फिजिकल में देख लिया। आप देखो इसमें क्या है, और रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप नीट की भी बात करो, जेई की भी बात करो, इवन सीबीएसई की भी बात करो, सो इट इज वेरी स्कोरिंग, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है। तो आपको ये जो नर्स्ट इक्वेशन, रेडॉक्स रिएक्शन जो है, और यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिल रहा है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स रिएक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। डन। सो ये एक चैप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स आएगा। फिर वी हैव सरफेस केमिस्ट्री विद अस। तो फिर हम सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। नाउ इनऑर्गेनिक में आप आ जाओ फटाफट। सर टेल समथिंग अबाउट यू। ठीक है, ओके बेटा, लास्ट में आई ट्राई।
हम्म। फिर हम करेंगे जीओसी, जनरल प्रिंसिपल, जो आप लोगों ने अभी 11th क्लास में खत्म किया होगा, जीओसी। तो आप लोगों ने 11th क्लास में जीओसी और हाइड्रोकार्बन सिर्फ दो ही चैप्टर्स पढ़े हैं ना, जीओसी और हाइड्रोकार्बन। बट एक्चुअल में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वो दो चैप्टर्स हैं, बिकॉज पूरा 12th में 50% तो सिर्फ ऑर्गेनिक है। समझे? समझ आया? हम्म। तो ये ध्यान रखना है। नाउ जीओसी के बाद क्या चैप्टर पढ़ा था आप लोगों ने? हाइड्रोकार्बन। यस, हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। ठीक है। सो वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन, कि भाई ये हाइड्रोकार्बन की क्या कहानी है, क्या क्या चीजें इसमें हम कवर करते हैं। अब देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और क्या हो जाएगा हम लोगों का? यस, क्या है? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा। ठीक है। फिर हम लोग हाइड्रोजन तो सिलेबस में है नहीं, डिलीटेड है ये सिलेबस से। एस ब्लॉक भी हमारा जेई के सिलेबस से रिलेटेड है। पी ब्लॉक का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है बस, ठीक है, पी ब्लॉक का एकदम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ज्यादा नहीं डिटेल में। बेटा, अदर देन नीट एंड जेई, यू कैन यू हैव वैरायटी ऑफ फील्ड एज वेल। लाइक आप फार्मा में जा सकते हो, है ना, फार्मा कर सकते हो, डी फार्मा, बी फार्मा। आप रिसर्च में जा सकते हो, आप फॉरेंसिक साइंस देख सकते हो। तो अपार्ट फ्रॉम दिस जेई नीट और भी बहुत सारी चीजें हैं। डन। बताओ जल्दी। हेलो। Yes, sir. Okay, sir. Sir, show the last page once again. यस, सो सॉरी। या सर, यू हैव अ टेक, नो नो नो, इट्स ऑल ओके, है ना, आप सही है। गुड। So, P block generally normal introduction in P block, because P block में पहले बहुत ज्यादा सिलेबस था, अब P block में हमें बहुत कम करना है। Just normal properties like their atomic size, their ionization enthalpy, what are the factors which affect the ionization enthalpy down the group, value increase or decrease. So these things. So it's a very easy things to learn, right? Now, in 12th class, you are going to study DNF block and coordination chemistry. These two chapters are very important for inorganic point of view, right? For the inorganic point of view, these chapters are very, very important. Previous page, beta. Which page you want? Last slide. Just a second. This one. How to memorize the numerous chemical reaction. Beta, if you know the mechanism, right? Let me show the last slide. Yeah, this one. This is a deleted chapter, hydrogen and s block element. These are not included. These are not included. ठीक है? चलो. Now, someone asked how to memorize the chemical reactions, right?
Beta, if you understand the mechanism behind the every reaction, because there are hardly, you know, 5 to 6 basic mechanism. If you know this mechanism now, then you can easily understand the concept as well, right? So I'm not saying that you just go and learn every reaction. If you know the mechanism behind the reaction, if you know the reason why this is happening, so if you know for the one reaction, then we can understand more than 100 reactions, right? So mechanism is very important to understand. If you know the mechanism very well, then you can easily understand the concept, right? Now let's see something about the coordination compounds. So coordination compounds is also you are going to study in class 12, right? This is a very 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 good chapters and very scoring chapter as well, right? Very easy to understand. In this we are going to study the different types of theories like CFT, VVT, how complex formation will take place, that we are going to study. Now if we talk about the organic chemistry, then in organic chemistry, some basic principle of organic chemistry, hydrocarbons, which you already studied in class 11. Similarly, we have a halogen, right? Alkyl halide and aryl halide. This is the first chapter of 12th organic. Next, we have the alcohol, phenol, and ether, in which we are going to study alcohol, phenol, and ether. Similarly, next we are going to study the क्या that is aldehyde, ketone, and carboxylic acid. So the first chapter in 12th organic is alkyl halide, aryl halide, haloalkene. Next is alcohol, phenol, ether. After this we have aldehyde, ketone, carboxylic acid. Then we have amine group, organic compounds containing nitrogen. And this polymer is deleted from NEET and JEE means, but it is included in JEE advanced. Hmm? So this thing we have, right? Now एग्जाम पैटर्न यू ऑलरेडी नो. हम्म. सो नाउ टेल मी, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क. फटाफट तुम लोग पूछो. कोई और भी क्वायरीज हो कुछ भी बच्चों की तो पूछ सकते हो एक एक बार. क्या क्या क्वायरीज है. So from no next class we are going to start with the solution chapter, right? So in your school how many chapters are completed? Is any chapter started or not in your school? Which chapter is currently going on? Not yet started. Not started. Okay. Summer vacations are going on. Okay. So we are going to start with the colligative properties. ठीक है. हम किससे start करेंगे? Colligative properties से. Okay, no worries. So we are going to start with the colligative properties. What are the colligative properties? बड़ा important है. The chapter name is solution, right? So chapter name ही solution है, and it's a very good chapter. In this solution chapter, we are going to study about the three different scenario. What happen when the solid dissolve in liquid? What happened when the liquid dissolve in liquid, and what happened when the gas dissolve in liquid. So these three things we are going to study in a very detailed way. Ki what happened when the solid like sugar, salt, they dissolve in the liquid. What happened when the one liquid is mixed with the another liquid, and what happened when the gas is mixed with the. Sir, can we get recorded session of this class from tomorrow? बेटा these all classes are recorded on YouTube, right? So you have access. तो आप वहां से भी सारी क्लासेस देख सकते हो, ठीक है. सो जितनी भी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना सब YouTube पे रिकॉर्डेड होंगी. तो आप वहां से भी उसको देख सकते हो, ठीक है. जितनी भी क्लासेस होंगी. सो नो वरीज फॉर दिस. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर नो ईच एंड एवरी क्लास पीपीटी विथ यू. कि जो भी हमने पढ़ा होगा वो पीपीटी में आपके साथ शेयर कर दूंगा. सो दैट आप लोग उसको भी देख सकते हो, ठीक है. टेल अस अबाउट द चैनल, राइट. हम्म. सो अगर चैनल का बात करें तो ये अवंती लाइफ 2 के नाम से होगा यूट्यूब पे. अवंती लाइफ 2. वहां पे अनेबल 2025-26 ट्वेल्थ केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट होगा. उसमें आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है.
डन। सर टेल अस अबाउट यू। ओके, सो आई एम विवेक तिवारी बेसिकली, ठीक है। और बेटा मैं लास्ट 6 ईयर से पढ़ा रहा हूँ जेई नीट और एडवांस का, ठीक है। एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल बीटेक। ओके, तो मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है मैकेनिकल से। देन आफ्टर ऑल्सो आई डिड माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री। फिर मैंने अपना जो मास्टर्स है वो पूरा केमिस्ट्री में किया। हम्म। और लास्ट 6 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ अभी बच्चों को जेई एडवांस नीट और इसके लिए, ठीक है। सो दिस इज माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन। और अवंती में मैं लास्ट 3 ईयर से हूँ। सो यहाँ पे हम बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं, सभी बच्चों को। विवेक सर, व्हाट इज योर नेम सर? विवेक तिवारी बेटा, विवेक तिवारी, राइट। Any doubt you can ask, or we'll end the meeting, because from the next class we are going to start the session, right? We are going to start with the first chapter. So if you have any doubt, you can ask. Sir, how to concentrate on studies? It's a very, it's a very easy thing. It's not a quite difficult thing to concentrate on studies. Just remember one thing, study is the, one of the easiest task. अगर आप कोई पूछे तुमसे कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है, तो वो स्टडी करना नहीं है। स्टडी करना इज वन ऑफ द इजीएस्ट वर्क, राइट? सबसे आसान काम है। तो इसको पहले तो आप डिफिकल्ट मत मानो, ठीक है। प्लीज मत सोचो कि बहुत वी आर डूइंग सच अ डिफिकल्ट टास्क, सच अ डिफिकल्ट जॉब। नो, यू आर डूइंग नथिंग। हम लोग ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग कुछ बोल रहे हैं कि जाओ आप कोई केमिकल बनाओ या नया केमिकल इन्वेंशन करो। पहले क्या करना है, वी आर जस्ट गोइंग टू ऑब्जर्व द थिंग्स। ये सारी चीजें आज से 100 साल 200 साल पहले ही लोगों ने बना दी थी। उसी चीज को हम पढ़ रहे हैं, उसी चीज को बार बार अच्छे तरीके से समझ के पढ़ रहे हैं। सो वी आर नॉट डूइंग अ वेरी बहुत अलग तरीके का कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो पढ़ना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अगर कॉन्सेंट्रेट करना है तो कुछ नहीं, सिंपली 2 3 चीजों को फॉलो करना है, राइट। द फर्स्ट थिंग इज, जो भी मुझे आज होमवर्क मिला है मुझे उसको कंप्लीट करना है बाई एनी हाउ। फिर मुझे अगर गेम खेलना है मैं गेम भी खेलूंगा, मुझे क्रिकेट खेलना है क्रिकेट भी खेलूंगा। लेकिन फैक्ट इज, आज का जो टास्क है उसको मुझे पहले कंप्लीट करना है, राइट। एक बार जब अपने टास्क को कंप्लीट कर दोगे, बर्डन लेके नहीं चलना कि आज वाला मैं कल करूंगा, कल वाला मैं परसों करूंगा। इस तरीके से चीजें नहीं होती हैं। इस तरीके से चीजें और डिले होती जाएंगी। सो क्या ध्यान रखना है कि हमें चीजों को बहुत जल्दी, मतलब जो भी टास्क मिलता है, जो भी होमवर्क मिलता है, जो भी असाइनमेंट मिलता है, उसको साथ साथ करना है। और एम करो। एम एम मीन्स अपने आप को रोज बोलो कि अगर मैंने जेई मेंस अच्छे से निकाला तो मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, मैं अच्छी जगह जाऊंगा, फिर मेरे को अच्छा पैकेज मिलने वाला है। तो अपने आप को छोटी छोटी सी ड्रीम्स दो कि अगर मैं अच्छा अच्छा कुछ करूंगा तो मेरे साथ और क्या क्या अच्छा हो सकता है, राइट। सो इस तरीके से मतलब मोटिवेटेड रहो अपने आप के लिए, तुम्हें कोई मोटिवेट करने का जरूरत नहीं पड़े। इफ समवन आस्क, अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई अभी मुझे क्रिकेट खेलना है, तो उसके लिए इज देयर एनी नीड ऑफ मोटिवेशन? कोई मोटिवेशन की जरूरत है क्या कि मैं आऊं और मोटिवेट करूं आप लोगों को कि यस क्रिकेट खेलो, तुम लोग जाके क्यों नहीं खेल रहे हो? देयर इज नो नीड ऑफ मोटिवेशन ना। बिकॉज आपको स्पोर्ट्स लाइक है, मन कर रहा है खेलने का, तो उसके लिए मोटिवेशन नहीं, तुम ऐसे ही खेल लोगे। तो दिस इज सेम फॉर सेम किसके लिए करना है आप लोगों को? सेम चीजें करनी है पढ़ाई के लिए, कि आप उसका एम बनाओ कि एम क्या है। अगर मुझे एम क्लियर होगा कि हाँ भाई अगर मैं जेई मेंस की प्रिपरेशन करता हूँ, मेरे अच्छे एग्जाम आते हैं, आई गेट द गुड कॉलेज। इफ आई गेट द गुड कॉलेज देन डेफिनेटली आई गेट अ गुड पैकेज। अगर अच्छा पैकेज मिलता है तो डेफिनेटली आई अर्न वेरी गुड अमाउंट। फिर मैं अपनी फैमिली का भी हेल्प कर सकता हूँ, अपना भी हेल्प कर सकता हूँ, एंड वी डिजर्व सम गुड लाइफ, राइट। सो छोटे छोटे से एम बनाते रहो अपने, जिससे तुम्हें खुशी मिले, और फिर उसको अचीव करने का देखो। डन। ठीक है। Yes, if you're if you're having phone in your hands,
जस्ट अवॉइड, फोन को अवॉइड करो बेटा। फोन से इतना नहीं, फोन्स के बिना भी रहना थोड़ा सीखो, और ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस, ट्राई टू हैव सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स भी खेलो। ये नहीं कि दिन भर आप फोन यूज कर रहे हो, ठीक है। व्हाट अबाउट नोट्स सर? नोट्स भी आपको मिल जाएंगे बेटा, जो भी हम पीपीटी में शेयर करेंगे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो, थैंक यू फॉर ऑल, आज के लिए सबको। मिलते हैं कल, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर, और वहां से हम लोग नई नई चीजें अपना धीरे धीरे कवर करेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं कल। यस, थैंक यू विनय। बाय एवरीवन, बाय। ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, वहां हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल।